अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज जो टॉपिक कवर करने जा रही हूँ, द नीड एंड गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। तो स्टाइलिस्टिक्स क्या होती है? स्टाइलिस्टिक्स एक ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है जो कि स्टडी करती है किसी लैंग्वेज के यूज़ को इन अ टेक्स्ट। अब वो टेक्स्ट स्पोकन में भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। स्टाइलिस्टिक्स जो है वो एनालाइज करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट को, but it is most often applied to literary works. The needs and goals of stylistics. Interpretation of meanings revolves around the relationship between author, reader, and text. Stylistics keeps on building theories and models to clarify various aspects of this relationship by Jeffries and McIntyre 2010. अब जो इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग है वो रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर एंड रीडर और टेक्स्ट का जो रिलेशनशिप है उनके अराउंड। तो स्टाइलिस्टिक्स जो है, जो स्टाइलिस्टियंस हैं, वो डिफरेंट टाइप की थ्योरीज और मॉडल्स बनाते हैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए। स्टाइलिस्टिक्स के वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं ऑफ दिस रिलेशनशिप्स को क्लैरिफाई करने के लिए। ये कहा था किसने? जैफियन मैकइंटायर ने। Stylistics depend heavily on theoretical and methodological approaches prevalent in other subdisciplines of linguistics, such as psycholinguistics, sociolinguistics, cognitive linguistics, feminist linguistics, and corpus linguistics. The aim of explaining the relationship between reader, writer, and text is not confined only to the formal properties of language but also consider contextual features. इसका इसका जो काम है वो ना सिर्फ रीडर राइटर और टेक्स्ट के दरमियान का रिलेशनशिप को और इसकी जो फॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करना है, बल्कि ये कंटेक्चुअल फीचर्स को भी कंसिडर करना है। बाय फॉर्म वी मीन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज at various levels such as word or syntactic structures, whereas the function of language is related to the purpose or goal the text is used to fulfill. The function of a text is determined based on various situational factors under which a text is produced, such as the time of text production, writer of the text, and the type of reader for which the text is crafted, thus determining the context of the text in questions. अच्छा, अ, इसके फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, कि कैसे टेक्स्ट कैसे प्रोड्यूस किया गया, किस टाइम पे टेक्स्ट प्रोडक्शन हुई, और जो राइटर ऑफ टेक्स्ट है और उसकी जो टाइप्स, उसके जो रीडर्स हैं वो किस तरह के टेक्स्ट को जो है वो पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो सब कुछ इसके अंदर इसकी क्राफ्टिंग में आता है। This is expressed through the reliance of stylistics on the context-free movement of linguistics, such as structuralism, to the wider context-related perspective provided by pragmatic and sociolinguistics. How this context can influence the interpretation of a text.